Hello all, welcome back to the BioRocks channel. In this video today we are going to learn about the phloem, that is one of the complex permanent tissues. Okay, so without any delay, I will be starting my video, children. Okay, so phloem, as we all know that it's a complex permanent tissue. Okay, so I'm talking about phloem today. So phloem is one of the vascular bundles. Okay, one of the vascular bundles along with the xylem. Okay, this particular phloem is going to actually transports the organic solutes. Okay, organic solutes from the site of production. So organic solutes here are nothing but the sugars which are synthesized during the photosynthesis from from the leaves, that is a site of production, which we call as source, to that of the other parts of the plant body which we regard as a sink. So these are the other parts of the plant body which are not participating in photosynthesis, which are not synthesizing the sugars. So remember that phloem is a vascular bundle or a complex permanent tissue. Because why do we call it as a complex permanent tissue? Because it is made up of different types of cells with different functionalities. The different types of cells. So it's made up of different types of cells, okay? Different types of cells here. And these different types of cells are, the first one is going to be the type called as seed elements, which are specialized cells present in the plant body. Next we have is the companion cells, which we see, which are present along with the seed elements. And next we have is the phloem parenchyma, okay. And lastly, we are going to have the phloem sclerenchyma, phloem sclerenchyma, which again exists in two forms. One is going to be the fibers, which we call them as phloem fibers, okay. Phloem fibers can otherwise also be called as bast fibers, okay. And secondly, we have another type of the scleroid, which is sclerenchyma, that is being called as scleroids, okay. So we are going to learn these different types of cells of the phloem, which are sieve elements, companion cells, the parenchyma, the phloem fibers, and the phloem scleroids. Okay. So before that, children, I will try to that is stress and specify mostly on the functions of the phloem here. Okay. So as your phloem is transporting the sugars from the source to the sink, we call this process as translocation. So usually a phloem is going to help in the translocation process. How is this happening is actually when in the cells, for instance, if you regard this as a cell, if the sugar concentration just goes on increasing because of the photosynthesis, what happens is this is going to create a osmotic gradient, children. The high levels of your sugar concentration is going to create a osmotic gradient. What this osmotic gradient does is it pulls water from the adjacent xylem, okay, from the adjacent xylem. So now what happens is the water rushes into these particular cells now. So as the water rushes into the cells, what is prepared here? A sugar solution is being formed here, okay. A sugar solution is formed. As a sugar solution is formed now in these cells, what happens is there is a high turgor pressure created. There is a high turgor pressure created in the phloem, okay, in the phloem. So now what happens is this high turgor pressure created in the phloem is going to it is going to now transport these sugars. They are going to transport these sugars. Okay.
Remember that the high concentration of sugar has created the osmotic gradient which pulled the water from the xylem, and this resulted in the formation of the sugar solution which created the turgor pressure in the phloem, by which the sugars are being transported towards which side? Towards the sink side. Sink is nothing but the other parts of the plant body. Usually, your phloem requires two things to transport the what you call is sugars. One thing is it requires ATP. So we call this transportation as active transport. Okay, active transport. So it is employing active transport for the transportation of sugars. And the second mechanism is going to be the turgor pressure. So your phloem is employing the active transport as well as the turgor pressure for the translocation process. Okay, children, this is important. So remember that as the phloem is going to move, so let me first show you this particular process in a way of a image that will be connecting to you the most. Okay, let me share my screen for this process, children. Give me a moment. I'll try to explain this process through an image for you. Okay, so you can see that in this image, you can see that these are the cells which are present, especially this is a leaf which is called as a source, which is synthesizing the sugars, and the concentration of sugars are increasing. Thereby, it is pulling the water from the adjacent xylem, which prepares a sucrose or a sugar solution. And this sugar solution here in the phloem is going to create a high turgor pressure, thereby which the sugars are being transported to the different parts of the plant body which are not synthesizing sugars. So you can see that as the sugars are being taken up by the sink here, they will be used in the cellular respiration process, and the level of the sugars here will be decreasing, right, gradually. So you can see that there is a gradient which has been created. This is low concentration and this is high concentration. So this will be the mechanism how the sugars are being transported from the source to that of the phloem and phloem to that of the sink, children. So this is the procedure. Now let me come to the what you call is different sources, that is the elements of your phloem, one by one, by which you will be made familiar now. Okay, so they have their own functionalities. Each and every cell are basically very important here. So the first cell that I would like to introduce to you, children, is going to be sieve elements, children. Sieve elements. Generally, sieve elements are of two different types. One is being called as the sieve members, okay, and the other one is being called as the sieve cells, we are going to call as, okay. Sieve elements are occurring in two different forms, okay. There are two different forms of these sieve elements. These sieve members are seen in the angiosperms, okay, and sieve cells are seen in the gymnosperms. But what is the basic structure of the sieve element is they are the narrow cells which are being present. These are the long narrow cells which are being present, and these are going to have a common plate in between. This is the first sieve element, okay, this is the second sieve element. So these individual cells here are called as sieve elements, we are going to call sieve element, okay. This is a sieve element, this is a sieve element, which is an individual cell, which is a individual cell. And these sieve elements placed one above the other are going to form a sieve tube. And in between they have a common plate, and this plate is being called as your sieve plate. We call this as sieve plate. Actually, sieve plate is nothing but a modified plasmodesmata. It is a modified plasmodesmata. The sieve plate here is going to have many of the pores. And these pores, actually what they do is, the function of the sieve plate is, the function of sieve plate is going to be major function, that is going to be, it is going to enable the flow, right?
enable the flow of the sugar solution, the sugar solution, or in short we call it as a sap. ओके, सो ये पोर्स रहने की वजह से आपका शुगर सॉल्यूशन जो है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक पास होने में वो आपको वे दे रहा है। ये एक फंक्शन होगा आपका सीव प्लेट का। दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका इज, आपके सीव प्लेट्स क्या करते हैं, आपको पता है कि हमारे हर्बीवोर्स जो है वो प्लांट्स को डैमेज कर देते हैं ग्रेज करते टाइम, और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं, वो सैप को सक करने के लिए लीव्स को और स्टेम्स को डैमेज कर देते हैं। तो यूजुअली जब आपके इंसेक्ट्स को या कोई हर्बीवोर एनिमल है जो वो अटैक करते हैं, अटैक करते हैं आपके प्लांट्स को, तो क्या होता है वहां पर इस फ्लोएम डैमेज हो जाता है। फ्लोएम क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे आपके फ्लोएम डैमेज होके ये यहाँ पर पोर्स आ जाते हैं, तो आपका सैप क्या होगा चिल्ड्रन, लीक हो जाता है ना, आपका सैप जो है लीक हो जाएगा। सो देयर बाय व्हाट हैपेंस इज योर सैप गेट्स लीक्ड, योर सैप गेट्स लीक्ड। सो इस लीकेज को आपको बचाना है तो क्या होता है, आपके सीव प्लेट्स जो है यहाँ पर वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस सम प्रोटीन्स विच आर बीन कॉल्ड एज फ्लोएम प्रोटीन। इसको ही हम लोग बोलते हैं पी प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। ओके, सो आपकी ये पी प्रोटीन्स जो है किसने प्रोड्यूस किया है, आपके सीव प्लेट्स ने। सीव प्लेट्स में ये पी प्रोटीन्स क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका ये वाला सीव एलिमेंट यहाँ पर डैमेज हो गया, तो यहाँ के ये जो पी प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स जो है वो है आपके पी प्रोटीन्स, जो आके यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्लॉट तैयार करते हैं, एक क्लॉट तैयार कर देते हैं। तो पी प्रोटीन्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ क्लॉट। ओके, प्रोड्यूस क्लॉट, देयर बाय क्या होगा यहाँ पर आपका प्रिवेंट हो जाता है लीकेज। ओके, यू कैन प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द सैप। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सैप का जो लीकेज है उसको हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं by the pea proteins, because they are forming a clot here, and this is produced by the sieve plates only. Okay, sieve plates not only they are helping in the flow of the sugar solution, but they're also helping in preventing the leakage of here what, यार सैप चिल्ड्रन, ये वाला है। तो अभी हम देखते हैं, तो ये है हमारा एक सीव एलिमेंट और ये है मेरा दूसरा सीव एलिमेंट चिल्ड्रन। ओके, इनके यहाँ पर है एक सीव प्लेट जिसमें है आपके सीव पोर्स है, ओके, जो एनेबल कर रहे हैं आपके शुगर सॉल्यूशन के मूवमेंट को। अगर हम एक सीव एलिमेंट को देखते हैं, उस सीव एलिमेंट में मेच्योरिटी के टाइम पे न्यूक्लियस लॉस हो जाता है। At maturity they are going to lose their nucleus. So nucleus ना रहने के वजह से maturity में आपके सीव एलिमेंट्स जो है वो बन जाते हैं, आपके डेड सेल्स बन जाते हैं। ओके, तो क्या रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बच जाता है साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म इज रिमेनिंग, दैट्स इट। and sometimes you can see vacuoles remained over here, but remember that आपके sieve elements में important organelles जो है वो absent है। क्या है यहाँ पर इस, एट मेच्योरिटी तो न्यूक्लियस जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स है, और इनके पास जो है इन सेल्स के अंदर राइबोसोम्स नहीं रहते हैं, गोल्जी बॉडीज नहीं रहते हैं, और साइटोसॉल भी नहीं रहता है। तो जिसके वजह से आपके सीव एलिमेंट्स जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, दे आर वेरी वेरी लो एक्टिव। रीजन क्या है, बिकॉज इनके पास बहुत कम नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। ओके, अभी मैंने बताया था बच्चों कि आपके फ्लोएम जो है किस प्रिंसिपल को अपनाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या चाहिए, एटीपी चाहिए शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्या आपका
ये वाला जो है सीव एलिमेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया तो पहले से ही कम है, तो एटीपी भी कम रहेगा, तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट तो नहीं रह पाएगा। ओके, ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए। तो इसीलिए ये सीव एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड कुछ सेल्स रहते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। ये आ गए हमारे दूसरे टाइप ऑफ सेल्स जिनको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। ओके, ये कंपेनियन सेल्स जो है इनमें, लेट मी टेक द फ्रेश पेज चिल्ड्रन। तो अभी हम देख रहे हैं हमारे कंपेनियन सेल्स के बारे में। कंपेनियन सेल्स में जो है इनके पास न्यूक्लियस भी रहता है, ओके, राइबोसोम्स भी रहते हैं इनके पास, और इनके पास हाई नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है, और गोल्जी बॉडीज भी रहते हैं इनके पास। सो जिसके वजह से आपकी कंपेनियन सेल्स जो है मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव रहते हैं। मेटाबॉलिकली दे आर वेरी वेरी एक्टिव। ओके, सो ये क्या करते हैं इज दे आर प्रोड्यूसिंग एटीपी। और ये प्रोड्यूस्ड एटीपी कौन कहां पर यूज होगा? इट इज यूज्ड फॉर transportation, or it is used for translocation of the sugars from source to the sink. Okay, leaf से लेके other parts of plant body. Okay, and remember children, आपके ये जो sieve elements है या sieve cells है यहाँ पर, इनके साथ रहते हैं आपके companion cells, जैसे associative cells है इनके। दूसरा चीज है, इन दोनों के बीच में भी एक कनेक्शन है जिसको हम यूजुअली एनसीईआरटी बुक में उन्होंने दिया है पिट फील्ड करके। एक्चुअली ये पिट फील्ड होता क्या है? इज नथिंग बट दिस इज आल्सो प्लाज्मोडेस्माटा ओनली। सो ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होता है, शुगर्स जो है, प्रोटीन्स जो है, आपके शुगर्स प्रोटीन्स जो है आपके सीव एलिमेंट से लेके कहां तक जा पाते हैं? कंपेनियन सेल्स के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर एटीपी चाहिए, मेटाबॉलिकली एक्टिव है ये वाले, तो इनको चाहिए शुगर्स। तो ये आपके सीव एलिमेंट से कंपेनियन सेल्स तक कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है? ये पिट फील्ड्स करवाते हैं। ओके, ये कंपेनियन सेल्स जो है इनको हम लोग देखते हैं सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखते हैं। जब हम लोग इनको जिम्नोस्पर्म्स में बात करते हैं, इनको हम बोलते हैं स्ट्रासबर्गर सेल्स। इन्हीं सेल्स को हम लोग यहाँ बोलते हैं स्ट्रासबर्गर सेल्स, या उनको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पर हो रहा है चिल्ड्रन? इट इज गोइंग टू बी इन द जिम्नोस्पर्म्स। ये होता है आपके जिम्नोस्पर्म्स में देखा जाता है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में हम इनको कंसिडर करते हैं एज कंपेनियन सेल्स। ओके, तो कंपेनियन सेल्स का फंक्शन क्या हुआ? एटीपी जनरेशन हो रहा है। एटीपी जनरेशन का मतलब क्या हुआ? दे आर फ्यूलिंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस या ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को वो फ्यूल कर रहे हैं। दूसरा चीज, वो लोडिंग भी करवाते हैं किसके अंदर? सीव एलिमेंट्स के अंदर। कहां से? लीव्स से। जैसे मैंने पहले इमेज में दिखाया था, तो लीव से जो शुगर्स बने हैं वो वाले मूव कर रहे हैं फ्लोएम के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं लोडिंग। और दूसरा, अनलोडिंग भी करवाते हैं। कहाँ पर? सिंक के अंदर, आपके दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, कंपेनियन सेल्स का, वो होता है दे जनरेट सिग्नल्स चिल्ड्रन। दे जनरेट विच सिग्नल्स? डिफेंस सिग्नल्स दे आर गोइंग टू व्हाट यू कॉल इज जनरेट, और वो ट्रांसमिट भी करते हैं। ओके, इन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं सिंक तक। कौन? फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं? दे जनरेट इवन सम ऑफ द फाइटो हार्मोन्स आल्सो, और ये फाइटो हार्मोन्स को भी वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सिंक तक। ये होते हैं आपके कंपेनियन सेल्स चिल्ड्रन। ओके, सो द नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू सी इज आर फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, अभी हम देख रहे हैं हमारे फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में। आपको पता है कि आपके पैरेन्काइमा जो है
that is going to be a living cell having a denser cytoplasm है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स रहेंगे और ये जो इनका सेल वॉल है वो थिन रहेगा लेकिन मेड अप ऑफ व्हाट सेल्यूलोज एंड यहाँ पर जो पैरेन्काइमा है चिल्ड्रन दैट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर बिकॉज ये पैरेन्काइमा जो है आपका वो कर रहा है स्टोरेज किसका स्टोरेज करता है वो शुगर्स को स्टोर करता है फैट्स को स्टोर करता है प्रोटीन्स को स्टोर करता है और रेनिन को स्टोर करता है और टैनिन्स को भी वो क्या करता है रेजिन्स को और टैनिन्स को भी वो क्या करता है स्टोर करता है तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज बेसिकली मेंट फॉर द स्टोरेज प्रोसेस ओनली चिल्ड्रन एंड ये वाला जो है फिलर के जैसा काम करता है जैसे हमने पहले भी देखा था कि पैरेन्काइमा एक पैकेजिंग मटेरियल के जैसा काम करता है जो पित्त में है जो कॉर्टेक्स में है जो एपिडर्मल सेल्स में है जहां पैकिंग करते हैं तो उनको हम लोग यूजुअली फिलिंग सेल्स या फिलर्स के जैसे उनको देखते हैं okay the last one that we are going to have is the sclerenchyma the phloem sclerenchyma तो आपका फ्लोएम का स्क्लीरेनकाइमा भी यहाँ पर टू टाइप्स का है चिल्ड्रन एक रहेगा आपके फाइबर्स और दूसरे रहते हैं आपके स्क्लीराइड्स रहते हैं आपके फ्लोएम फाइबर्स को हम बोलते हैं बास्ट फाइबर्स बोलते हैं बास्ट फाइबर्स या इनको हम बोल रहे हैं क्या फ्लोएम फाइबर्स बोलते हैं ये जो बास्ट फाइबर्स है ये लंबे टैपरिंग एंड वाले स्ट्रक्चर्स है ये हार्ड रहते हैं और ये क्या करते हैं इस आपके प्लांट्स को ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर्स what they do is they support the tension creator okay they support the tension children and दूसरा चीज होता है कि वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपके प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है कौन आपके बास्ट फाइबर्स इनको हम लोग कमर्शियली भी यूज करते हैं जैसे कि जूट फाइबर्स है हेम्प फाइबर्स है तो वो होते हैं आपके बास्ट फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स जब हम स्क्लीराइड्स के बारे में बात करेंगे आपको पता है कि आपके स्क्लीराइड्स जो है they are going to actually provide a compression strength देते हैं फ्लोएम को ओके कंप्रेशन स्ट्रेंथ देते हैं और दूसरा चीज ये है आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा है कि आपके जो स्क्लेराइड्स है ग्रिटी नेचर है जिसके वजह से क्या होता है इस आपके हर्बीवोर्स जो है थोड़ा सा they are going to hesitate to eat away the plant parts okay hesitate to consume the plant parts so ये क्या कर रहा है प्रोटेक्शन दे रहा है कौन प्रोटेक्शन दे रहा है आपके स्क्लीराइड्स प्रोटेक्शन दे रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ग्रिटी नेचर दे आर गिविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं ओके ये सब चीजें हैं आपके अलग अलग से जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके फ्लोएम के उनके टास्क जो है उनके फंक्शंस जो है हमने देखा है तो अभी मैं क्या करती हूँ आपको इमेजेस दिखाती हूँ जिससे आपको और अच्छा सा समझ आएगा ओके so children the first thing that I would show you is the sieve elements children तो आप sieve elements को देखिए बच्चों यहाँ पर you can see that ये है आपके sieve plate ये है आपके pores उनके lateral walls में भी यहाँ पर क्या है pores रहते हैं जो मैंने बोला pit fields होते हैं या plasmodesmata connections है जो आपके क्या बोलते हैं आपके ये जो सिव एलिमेंट और ये कंपेनियन सेल के बीच में देखिए कनेक्शंस है आपके प्लास्मोडेस्माटा का जो पिट फील्ड्स हम बोलते हैं रिमेंबर चिल्ड्रन मैंने बोला था कि आपके जो सीव प्लेट्स है वो पी प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं ये है आपके पी प्रोटीन्स जो आपके सेल को क्या करते हैं दे आर गोइंग टू डेवलप द क्लॉट बाय व्हिच देयर विल बी द prevention in the leakage of the sap ये होता है ये चीजें okay now come to another image where I will show you another sieve element here you can see here so this is a sieve element this is one of the sieve element okay all the sieve elements are joined together through they're having a common sieve plate which is present okay and these are the companion cells which are associated and you can see that these companion cells and the sieve elements जो है उनके बीच में connection है through pit fields के through ये है आपके pit fields या plasmodesmatal connection जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी ओके हमारे पास दूसरा एक इमेज है उसको भी देख लीजिए तो ये है आपके जो
sieve plate के pores, ये है microscopic view इसका जो आप देख पा रहे हो. तो ये है आपके sieve elements, आपके companion cells, and let us see some other type of cells which are being present. Okay, so this is another image that you can see that these are the long tapering and bast fibers. Okay, and these are your florin parenchymal cells, and the nucleated structures are nothing but your companion cells, and these structures are your sieve elements. So इनके साथ साथ we are going to even have the fibers which are giving flexibility, what you call is compression strength provide करते हैं. Okay, these are the different sort of the elements that you can see in the phloem, and as you know, your phloem is going to help in the translocation process. So it is must for us to remember all the elements, children. I hope you all have understood this. Okay, if you understood this and if you like this video, please hit the like button and try to share with this channel with many others, and subscribe my channel also. Okay, thank you all. Thank you very much.